Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got the hair tutorial for you for the previous look that I posted. So this tutorial will be in English and in Urdu. So आज मैं आपको ये हेयर स्टाइल सिखाना दे रही हूँ। तो ये जो है ना, ये काफ़ी पॉपुलर ब्राइडल हेयर स्टाइल है जो यहाँ पे यूके में हम काफ़ी ज़्यादा कर रही होती हैं। यहाँ पे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के बाल इतने होते नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा हेयर पीसेस यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये काफ़ी ईजी तरीका है जल्दी से हेयर स्टाइल करने के लिए. So this hairstyle I'm going to show you today, it's the base of quite a few different hairstyles. So you could, what I'm going to do to the back basically is can be used for a lot of different hairstyles. So what I've done is I've separated the hair from the front, sectioned it off, tying the back into a ponytail. So यहाँ पे मैंने पीछे ponytail कर दिया, आगे वाला जो हिस्सा है मैंने उसको अलग छोड़ दिया, बाकी के जो बाल हैं जो पीछे उनको पिन कर रही हूँ. So I'm just adding some pins in and getting rid of the hair. So here what we're going to use is hair padding. So this is the kinky bulk hair that I get from the Afro-Caribbean shops. So what I'm doing is I'm just shaping it and placing it in to create like my volume for me without adding any hair pieces yet. So there's quite a bit going in here. So you have to just secure this nicely and form a nice bun. So यहाँ पे मैंने padding इस्तेमाल की है, kinky bulk hair इसका नाम है. And ये मैं यहाँ पे add कर रही हूँ. आगे से देखें कि काफ़ी ज़्यादा बाल मैंने छोड़े हुए हैं जो फ्रंट स्टाइलिंग के लिए छोड़ दिए हैं. सो यहाँ पे ये मैं ऐड करती जाऊँगी जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा बन जो है तो सही लगेगा. ये काफ़ी बड़ा हेयर स्टाइल है पीछे से, तो काफ़ी ज़्यादा पीसेस मैं यूज़ कर रही हूँ. पहले 1-2 लगा के फिर 2 और लगा रही हूँ, नीचे तक लेके आ रही हूँ, उसको टाइट रख रही हूँ एंड देन इसकी पिनिंग कर रही हूँ. So I keep adding more pieces of padding. So I've added in 2, then I'm adding in another 2, securing it in and really getting that shape that I want. So this hairstyle is really quick and really popular, what a lot of makeup artists are doing. And it's a really quick way of creating a really big heavy bun at the back without actually backcombing a lot of your own hair and things like that. So I've obviously done my ponytail, adding my padding. I've added quite a bit in. I think I've already added 4 pieces in, and this is another 2 pieces going in. So you can see I'm just shaping it all the way around and pinning it in. So there are different ways of doing these hairstyles. This is one of them, and obviously the front styling changes the complete hairstyle. So you could keep this at the back and then change the front to however you wanted to do it. So we just added in padding. Now at the top I want more padding for the bouffant. So this is where your dupatta is going to go on. So instead of backcombing and everything going flat, I'm just adding the padding in. So यहाँ पे टॉप पे मैं अभी padding लगा रही हूँ जहाँ पे हमने puff जो बनाना है, तो फिर वहाँ पे ऊपर दुपट्टा आ जाएगा, फिर flat नहीं होता. So इस तरीके से आपने अपना shape लेके आ रहे हैं, सारी shape में लेके आ रही हूँ. Obviously experience से आपको ज़्यादा पता चलेगा. कई दफ़ा जब आप बाल पीछे लेके आएंगे तो सही नहीं होगा, तो उसकी pinning आपको फिर दोबारा सही करनी पड़ती है. So I'm just pinning this in and I've got enough shape, padding there for my hair to come back onto it, and I don't have to backcomb it a lot. I can just literally just take it back. So the next section is part is to add these hair twirls. So the hair twirls you can get online on Amazon and from different companies as well. I get mine from Coco Hair in Manchester. You can get these in different colours. So this colour didn't match exactly, but it was absolutely fine for the photo shoot. So this comes with a clip on the end, so I'm just going to add this onto the back now. So instead of having to curl our own hair or add on like a half head wig, I'm adding on the twirls. So what I'm going to do is clip it in and zigzag it across, and I'm actually going to add 2 of these. So यहाँ पे मैंने hair twirl लिया है, ये pieces यहाँ पे मिलते हैं. I don't know पाकिस्तान इंडिया में मिलते हैं या नहीं, so I'm sorry अगर आपको नहीं मिलते ये pieces, या शायद ढूंढने में मिल भी जाएं. तो ये मैंने इसकी एंड पे ना एक क्लिप सा होता है, तो वो क्लिप ऐसे जिगजैग करके इसको लगा दूंगी, एंड ये मेरा मतलब पीछे जो है ना बन वो बन जाएगा. ये 2 हिस्से में लगा रही हूँ. ये कलर था एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा, लेकिन बाद में जब इसके आप खुद के बाल पीछे लेके होंगी तो ठीक हो जाता है. तो यहाँ पे ग्रिप्स लगाई जा रही हूँ एंड इसको पिन कर दूँगी. So this is the basis of my bun now. So I've got my padding in, so I'm just going to take this across, as you can see, pin it in, and I'm using grips to pin it in and U-pins, and I'm just going to, at the end, I'm kind of like going to tuck in a lot of the bits. So I've always explained I kind of like go a little bit bigger than what I need to, and then I pin everything in. So I know that afterwards I'm going to be pinning all the loose ends in. There are so many different ways of doing this hairstyle, so this is one of them.
So now I'm taking my second hair twirl and I'm adding this in. So I started from the opposite side now, pinning it in there, and then I'm going to bring it round to the other side. So एक और hair twirl ले रही हूँ, दूसरी साइड से पिनिंग शुरू की है एंड यहाँ पे अभी बीच में ले आऊँगी एंड देन जो गैप्स हैं वहाँ पे उसको खींच के तो जिधर जिधर मुझे चाहिए वहाँ पे पिन कर दूँगी. So मैं नॉर्मली काफ़ी बड़ा हेयर स्टाइल करती हूँ एंड बाद में उसकी ना थोड़ा सा उसको पिन करके तो फ्लैट कर दूँगी जैसे मुझे उस टाइम पे सही लगता है. So I'm just making sure my model's head is upright so I can actually see how everything is sitting. So you can make this as big or as small. You could have done less padding and just used one hair twirl and made it quite small and tight. So it's completely up to you what kind of look you're going for here. So what I'm trying to show you is different techniques and things like that, so then you can apply them to however you want to, create your hairstyles. तो यहाँ पे आप छोटा बन भी बना सकते थे, पैडिंग कम लगा के एक हेयर ट्वेल यूज़ कर लेते, पीछे से छोटा सा बन हो जाता. सो मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स दिखाई जा रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट देन आप उनसे ना कुछ सीख के एंड देन जैसे आपका मर्ज़ी आप अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं. So now I'm just adding in my tikka, making sure that I secure that in. If you want to watch the makeup tutorial, I have added that a few days ago. You can go and have a look at that as well. So from the front you can see I tried to leave as much hair as I could because I need to take some of this back and then I wanted to use quite a bit at the front as well. So I'm taking a very small section now and I'm going to take this backwards, back comb it a little bit and then just take it over the padding that I've got. So that creates your bouffant for you. So यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन बालों का लिया है. नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैक कोमिंग कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली बैक कोमिंग आपके बालों के लिए सही नहीं होती. सो बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा मिडल में मैं बैक कोमिंग करूँगी जहाँ पे टिक्का आ रहा है क्योंकि वहाँ पे गैप आ जाता है. तो वहाँ पे थोड़ी सी बैक कोमिंग करके तो इसको पीछे ले जाऊँगी एंड देन पिनिंग कर दूँगी. So there's always a gap when you first take this piece back where you've got your tikka going in. So I always kind of like back comb that a little bit just so that there's no separation and then I'll take it backwards. So I'm just using some texturizing powder here which just gives you a little bit more grip to back comb. तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग पाउडर इस्तेमाल किया है. अब हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं. हमेशा मैं टेक्सचराइजिंग पाउडर नहीं यूज़ करती लेकिन अगर टेक्सचराइजिंग पाउडर है तो उससे थोड़ी सी बैक कोमिंग जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है. So now I'm just smoothing over the top section of the hair. So I'm just using this shine spray. This is from, I think it's Wow Hair. It's like a shine spray. So I'm just adding this on, smoothing everything down, and then I'm just going to pin this at the back. And you can see that the hairstyle's starting to form now. So साइड से जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैंने थोड़े से बिट्स देख रही हूँ कि किस टाइप की मैंने हेयर स्टाइलिंग करनी थी. मैंने को सॉफ्ट सा हेयर स्टाइल करी थी. अपने बिट्स निकाल रही हूँ जो बाहर में छोड़ूंगी और इनको कर्ल करूँगी एंड देन इसकी सेक्शंस करके इसको थोड़ा सा बैक कम करके तो ईच सेक्शन को पीछे ले जाऊँगी. सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आप इनको कर्ल भी कर सकते थे. सो मैंने पहले भी बोला है कि फ्रंट स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके होते हैं. इसको कर्ल करके सेट करके फिर एक कर्ल करके भी पीछे लेके जा सकती थी लेकिन मैं एक सॉफ्ट सा सिंपल सा एक फ्लोई सा हेयर स्टाइल करी थी. तो यहाँ पे थोड़ा सा हर सेक्शन लेके उसकी थोड़ी सी बैक कोमिंग करके एंड देन इसको थोड़ा सा स्मूथ करके एंड देन इनको पीछे ले जाऊँगी लेकिन पहले हर सेक्शन को मैं थोड़ी सी बैक कोमिंग करूँगी. So your front hairstyling can be done in so many different ways. So you could keep the bun the same at the back, but your front hairstyle could be absolutely, different each time. So what I'm doing is I've taken each section and back combing it, and then I'm smoothing it out afterwards, and I'm going to pin it back. But what I wanted was something like quite soft and a little bit more on the flowy side. So what we could have done is we could have curled each section here, pinned it up, let it set, and then take each curl backwards as well. So the variations at the front are completely up to you what you want to do. So for this particular hairstyle, what I've done is I've taken 3 sections, back combed them like you can see, and then what I'm going to do now
is smooth over just the rough bit of the back combing a little bit. I'm just using the end of my comb to do this, smooth it out, and then I'm just going to take it back lightly and pin it backwards. And it depends on you how you pin this, because even the 3 sections I've done, there's so many different ways of pinning it and creating something completely different. So it's up to you how you do this hairstyle. सो अगेन आगे से मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको बड़ा रखती हूँ, क्योंकि बाद में जब आप दुपट्टे की पिनिंग करेंगे या जब आप इयरिंग्स लगाते हैं वगैरह उस टाइम पे ना, क्योंकि कई दफ़ा सहारे होते हैं इस टाइप की चीज़, तो वहाँ पे फ्लैट हो जाता है, तो वो फिर अब obviously सही नहीं लगता, डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा रखा हुआ है, जब सहारे लगाऊंगी वगैरह तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको ना फ्लैट कर दूँगी। So from the front, what I'm doing is just smoothing it over, looking at, I didn't have a mirror in front of me, so I was just, kept going in front to have a look how I wanted to place this hair. Now, I've explained before, I always go a little bit bigger than what I need to, because when you put the scarf on, sometimes it flattens your hair, and at that point I know whether I want it a little bit more flatter or not. And also when you put your big earrings on and they've got like big sahari and things like that, that flattens your hair as well from the side. So what I do is I just pin it in loosely, and if I need to adjust it or make it a little bit flatter, I will do that afterwards. So I've done one side, so I'm just smoothing it over, just going through the hair, puffing it out if I need to, just making sure there's no like rough bits around now. But I'm still not spraying it completely. So the next section is basically on the other side. Again, I'm taking my bits out, making sure they try and match up a little bit, and then I will take my sections again, back comb them, and then take them back. सो अगैन दूसरी साइड से वही चीज़ मैं कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैंने जो बिट्स मैंने कर्ल करने उनको थोड़ा सा निकाल लिया, एक एक सेक्शन करके इसको बैक कोमिंग करूँगी, फिर इसकी थोड़ी सी स्मूदिंग करूँगी एंड देन इसको पीछे पिनिंग कर दूँगी. So I'm only giving it a very light back comb. If you guys are enjoying the videos, please do make sure that you do like the videos, comment and share if you can do, and obviously do follow me on Instagram as well. It's Shazma MUA. You guys liking and commenting and things like that makes a difference to my videos and the reach, I think, to them as well. Slowly I'm trying to figure out how YouTube and the algorithm works and things like that, so I do appreciate it when you guys comment. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें एंड कमेंट मुझे छोड़ के मुझे बताएं. बालों की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमेशा आती है, लेकिन मैं नोट किया है कि मेकअप ऑब्वियसली ज़्यादा वीडियो चलती है, ये बालों वाली कम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैंने टेक्निक्स एंड चीज़ें डाली हुई होती हैं, तो इनको देखा करें. एंड अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से मुझे भी थोड़ी सी वो ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि करती रहूँ और ज़्यादा वीडियोज़ करती रहूँ आपके लिए, एंड यूट्यूब पर भी मेरी फिर से ज़्यादा चल जाती है. सो थैंक यू सो मच. सो यहाँ पे मैंने फ्रंट स्टाइलिंग कर ली है. सो आप देख लें कि ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर से मैंने ना काफ़ी वाइट छोड़ा हुआ है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि उसकी ना फिनिशिंग सही आ जाती है. ना पीछे से जो भी बाल मतलब मैंने सिर्फ पिन कर दिए थे ना, सो जो आगे वाले बाल है उनको अभी मैं पिन कर रही हूँ. सो आप देखें कि मैं पिन लेके आती हूँ, उसमें ग्रिप डालती हूँ, तो ट्विस्ट करके वहीं पे उसको अंदर पिन कर देती हूँ, तो पिन भी नज़र नहीं आते. So all the hair that's left out now, what I'm going to do is just blend it into the back hairstyle. So what I'm doing is I'm taking grips, I slide the grip on, pull some of the hair, twist it and place it into the bun, and this way you actually hide the actual pinning. And then what I'm also doing is now sections of the hair twirls that were sticking out. It has loads of little hair that are normally out. So I'm just taking those bits and I'm just neatening it all up now. So I'm just going around, taking all the rough edges, twisting them on themselves and pinning it in. So अभी जो हेयर ट्वेल के जो हिस्से थे उनको भी मैंने थोड़ा सा नीट कर दिया है पीछे से. यहाँ पे मैंने बस कर्ल कर दी है. अभी ये जो सेक्शंस है थोड़ा सा हेयर स्प्रे लगा के, कोई भी हेयर टोंग यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने GHD की रखी हुई है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ. And then I've just hairsprayed the front curls, and then what I'm doing is just going around, wrapping it round. And you could use straighteners here, you could use curling tongs. I've got my GHDs that I normally use, so I'm just curling away.
So I hope these hairstyle videos are helping as well. I do get a lot of requests for hairstyle videos, and I'm trying to bring different hairstyles for you and different techniques so that at least you can pick up the techniques and then adapt them to your own applications. So here pretty much the hairstyle was done, so now we're going to go in with the earrings. So I'm just going over the hair, making sure everything is nice and neat now. I'm using the Tresemme hairspray, which is it's not a very strong hold hairspray, but then afterwards I go in with some strong hold hairspray as well. So यहाँ पे हमने सारे earrings लगा रहे हैं एंड उनके काफ़ी बड़े से लाइक सहारे थे. So उसको पिन कर देती हूँ एंड देन आप नोट करेंगे कि जब मैं पीछे पिन करूँगी ना थोड़ा सा वो फ्लैट हो जाएगा हेयर स्टाइल. सो वहाँ पे आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है कि फ्लैट लग रहा है या उसको आपने थोड़ा सा पफ करना है बाहर या कैसे भी. So I'm adding my earrings in. So the Sahara, it just depends how you want them, but it looked nice. I thought flowing backwards, and then you have there was an extra one in here to hold the weight of the earring. So when I attach those, sometimes what happens is your sides of your hair will flatten. So at that point, then what I'll see is whether I like it flat or whether I want to puff out the hair a little bit more, and I'll pull it out a little bit. So that's personal choice there. If you haven't seen the makeup tutorial, please do watch it. It was really, really nice. It's a very nice matte, glowy, shimmery look, and it was lovely. So the Sahara I kind of like just pin up and put them where I want them. Can you see it's flattened that side a little bit? So again, if you wanted it flat, you can do. So this was the final look. ये हमारा final look था. यहाँ पे मैंने ring light लगाई हुई थी. No edits or anything like that. And this is absolutely flawless, mashallah. If you want to see the makeup, like I said, you can have a look in the tutorial before. So I hope you've enjoyed this tutorial and I hope you've learned something, and inshallah I will see you soon. Allah Hafiz.